Okay, chalo ji. Let's start with the second chapter for piston engines. Okay, most important chapter. If you understand this, you will be able to understand piston engines. If you don't understand this, you'll cramp in piston engines. ठीक है जी, शुरू करते हैं. एंड ये चैप्टर शुरू होता है ऑटो साइकिल के साथ. ठीक है, पढ़ते हैं ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल में just like a cycle, we have strokes instead of stages. In the Brayton cycle, here we have strokes. ठीक है, ऑटो साइकिल इज अ 4-stroke साइकिल. ठीक है, पहला स्ट्रोक इंडक्शन, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन, तीसरा स्ट्रोक पावर, चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट. ये हो गए स्ट्रोक्स. व्हेन आई टॉक टू यू कि यार इस पूरे में इवेंट्स कितने हो रहे हैं, देयर आर 5 इवेंट्स. इसके बीच में एक एक्स्ट्रा इवेंट आ जाता है व्हिच इज हियर नोन एज द स्पार्क. Okay, and that spark is just like the name. The event is called combustion. So we have 4 strokes and we have 5 events. Brayton cycle में जो combustion हो रहा था, that was happening in a closed space or in an open space. It was a flame tube which was surrounded by a air casing, right? So gases could expand, gases could cool, gases could dilute. So the pressure could remain constant. Now, if I give you an enclosed space and I do combustion, do you think that the pressure will remain constant? No. What will remain constant? The volume will remain constant. That's why the Otto cycle is known to have a constant volume combustion. That means whenever the combustion happens, it happens at a constant volume. Clear? Have I taught you the difference between combustion and explosion? Tell me, Janvi, do you know the difference between combustion and explosion? Combustion controlled होता है. And Explosion नहीं होता. explosion is uncontrolled burning. Okay, which one do you want? Controlled. Okay, good. So, to understand the Otto cycle, we will also, just like in the Brayton cycle we will be studying about what will happen to the pressure, what will happen to the volume, what will happen to the velocity of gases across all of these stages. So we have pressure, we have volume, we have temperature. Okay, but when I teach you this, I will also be teaching you it in relation with what happens inside the cylinder of the engine. Okay, so piston engine has a piston. So what is a piston? आप लोगों ने वो कैस्ट्रॉल की एड देखी होगी, है ना? सो ये होता है पिस्टन. एंड ये पिस्टन मूव करता है एक सिलेंडर के अंदर. ये पिस्टन मूव करता है एक सिलेंडर के अंदर. लाइक सो. ओके, एक क्लोज सरफेस में ऐसे ऐसे करते रहेगा? नहीं. यहां पे होते हैं 2 वाल्व्स, 1 2. एक हवा अंदर आने के लिए, एक हवा बाहर जाने के लिए. ये वाल्व क्लोज हो सकते हैं, वाल्व बंद हो सकते हैं. ठीक है,
इसको हम लोग कहते हैं इनलेट वाल्व, इसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। कौन से दो वाल्व हैं? इनटेक एंड एग्जॉस्ट। कौन से दो वाल्व हैं? इनटेक वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाल्व्स का भी पोजीशन लिख देंगे। इनटेक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इंडक्शन में इनटेक वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, बाकी सब में हर एक वाल्व क्लोज्ड रहेगा। कि we'll keep things very simple। इजी है ना? पिस्टन कहाँ पे मूव करता है? इन द इंडक्शन स्ट्रोक। ओके, यस, भाई एक बार ये रिपीट करना, थोड़ा नेटवर्क ब्रेक हुआ था। ओके, so I'll repeat it again for you. In the induction stroke, the intake valve is open because you're intaking air, and in the exhaust stroke, the exhaust valve is open because you're exhausting air. ओके Otherwise, all other valves are closed. ओके Simple है ना? Now to understand what is a stroke. What is a stroke, Piyush? किसी चीज का आना जाना या किसी चीज का ऊपर या क्लोज होना बार बार, जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे हो रहा है बार बार, तो वो एक स्ट्रोक हो गया। Okay, correct, absolutely correct. So the piston moves up and down inside the cylinder, right? So if it goes from here to here, this is a stroke. If I go from here to here, it is a stroke. Painting brush, stroke, 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 stroke. Correct? Piston, stroke, 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 stroke. 4 such strokes, 1 cycle. Okay? So when the piston goes up, it can only go up till a certain amount. And this certain amount is known as the TDC, top dead center. And when the piston goes down, it can go down till a certain amount. BDC, bottom dead center. Any doubts? एंड यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, चलो। So how many strokes do we have? 4 stroke engines, the 4 stages, the 4 strokes of an auto cycle. So देखो जी क्या होता है। इंडक्शन पहला स्ट्रोक, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, नहीं लिखना है मत लिखो, बट ध्यान दो। इनटेक वाल्व जो है इस पहले स्ट्रोक में, ये टॉप डेड सेंटर पे था। सृष्टि मत लिखो, समझो। इनटेक वाल्व खुल जाता है, इट ओपन्स। हाउ डज दिस ओपन? सो बेसिकली ये जो वाल्व है इसको ना एक रॉड नीचे की तरफ पुश करती है, टाक, तो हवा फ्लो कर सकता है। ओके, दैट इज हाउ द वाल्व्स ओपन। सो दीज आर आल्सो मूविंग थिंग्स। ओके, सो द इनटेक वाल्व opens and the piston moves down. So valve has opened, the piston is moving down. What will happen? A low pressure will be created because of the suction. A low pressure is created, piston moves down, pressure is low, because of that we have a suction, right?
Low pressure causes a suction which draws what inside? It draws the mixture in. What will happen to the volume? Of course, volume has increased. What volume? This is the volume, okay? This is the volume. पहले वॉल्यूम कितना था? कम था, ऑफ कोर्स. टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर प्रेशर. वेरी सो प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर भी कम होगा. गुड. Now what happens? The intake valve which was open, now it closes down. And then the piston moves up. So इसके अंदर now this complete area is locked. Nothing can go out, nothing can come in. But this piston is compressing the air as it is going up. Do you guys agree and follow with me? It is compressing the air. So all of that air which was there, it has been compressed now. So the piston moves up in a closed area. Shrishti, if I reduce the volume, what will happen to my pressure? Will increase. Very good. So the pressure will increase. Just like we wanted to do it in jet engines, we wanted a high pressure before combustion because नॉर्मल में आप कंबशन करोगे 50 का पावर मिलेगा, तुम उसमें प्रेशर ऐड करो 150 का पावर मिलेगा, उसमें से 50 हटा दो 100 का प्रॉफिट होगा. ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट ग्रेटर द प्रॉफिट. Pressure increases. Why does it increase? Because of compression, because the volume has reduced. When I tell you the volume has reduced, by how many times has the volume reduced? कोई कैलकुलेशन होगी, कोई कैलकुलेशन होगी, राइट? है ना? सो एक चलो ये कैलकुलेशन देख लेते हैं. यहां से यहां तक आया, चलो इसको थोड़ा साइड रखते हैं. सो यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम. यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम और यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम, इट इज मेड अप ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. अब ये पिस्टन यहां से यहां वॉल्यूम स्वीप कर देता है. सो दिस इज नोन एज द स्वेप्ट वॉल्यूम. बचा कितना? जब भी पिस्टन आता है यहां पे ऊपर आ जाता है तो इतने वॉल्यूम की क्लियरेंस रहती है ना? सो दिस मच वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस इज देयर बिटवीन द सिलेंडर्स हेड and the piston. So this is known as the clearance volume, right? अब उसने किया क्या है? कंप्रेस किया है. कितना कंप्रेस किया है? टोटल वॉल्यूम को उसने क्या बना दिया? क्लियरेंस वॉल्यूम बना दिया. डू यू ऑल अग्री विद दिस? यस. तो उसने टोटल वॉल्यूम को क्लियरेंस वॉल्यूम बना दिया. वॉल्यूम कितना कम किया? सो कंप्रेशन रेशियो इज टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम. ओके, कोई डाउट? एनी डाउट? कितना कंप्रेस हुआ? कंप्रेशन रेशियो कितना है? अगर उसका कंप्रेशन रेशियो लेट्स से 7:1 है तो उसका प्रेशर भी 7 टाइम्स बढ़ेगा, है ना? ओके, चलो गुड. What will happen to the temperature, Piyush?
टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, Absolutely. प्रेशर इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम कम हुआ है, P1 T1. Beautiful. Absolutely correct. Now, combustion happens. Then we have combustion. So, all of this excess pressure that you have, that will get combustion will happen and it will get transferred into heat and pressure energy, right? So, when combustion happens, you need to realize that this is an event. That this is an event. Strokes are only this. This is the stroke, this is the stroke, this is the stroke, this is the stroke. Okay, rest are, this is an event. So piston का मैं motion तो यहाँ पे नहीं है, since this is an event, this is not a stroke, so I'll not write anything about the piston here. What will happen to the pressure? Pressure will increase, right? Is this a stroke? No. So will anything happen to the volume? No. What will happen to the temperature? Of course, it will follow. Temperature will increase. Clear? Now, all of this energy after combustion, all of this heat which has been released, now this heat will do work. Power stroke is the only stroke which is developing power. In the induction stroke, engine is doing work on the gas and sucking it. In the second stroke, engine is doing work in compressing it. Only in the third stroke, you're getting a power output. Only in the third stroke, the air is driving the piston. Otherwise, the engine was driving the piston. Only in the third stroke you're getting power. Hence, it is known as the power stroke. Understood? Piyush? Clear. So, भैया सॉरी, yeah. एक चीज है, आपने बोला कंबस्टन में कि अपना प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लॉजिकली सही कहा, बट हमें थ्योरी पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 कांस्टेंट है, P1 V1. तो Piyush, that is when there is no external addition of energy in the system. हाँ, कोई एडिशन नहीं हुई, बट आपका प्रेशर यहाँ पे जब combustion हो रहा है, there is addition of energy in the system. हाँ, कंबस्टन हुआ, एडिशन हुआ एनर्जी का, क्योंकि वो हीट एनर्जी आई वहां पे. Now what is it? हाँ, तो मैं मतलब ये बोलना चाहता था कि P1 and PV is equal to constant, हमें ये पता है. तो अगर that is if gases are behaving, आपने closed chamber में आप उसका volume change कर रहे हो, temperature change कर रहे हो without adding energy to the system. ठीक है, वो तभी true है. ठीक है, कंडीशन है उसकी, बस वहां पे एक वो होना चाहिए कि एडिशन एनर्जी है, जब भी वो ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं है, वो थ्योरी है. Yes, absolutely ना. फिर तो वही बात हो गई ना, in a closed system. So अगर आप actually, sorry I did not put it down that very well there. Here it is there in a closed system. Closed system मतलब there is no adiabatic system. There is no external addition of energy. There is no taking away. There is no giving away of energy. It is a closed adiabatic system. Okay? नहीं तो हो ही नहीं सकता ना. लॉजिकल है. इसने भी, मैंने यहाँ पे बोला ही नहीं कि यहाँ पे तुम आग लगा के रखो, क्या लगा के रखो, नहीं. एनर्जी ऐड हुई है सिस्टम. ठीक है, क्योंकि मैं वो ना, मेरे दिमाग में था कि हम लोग कंबस्टन इवेंट का कोई ऐसे टेबल नहीं बना सकते. मैंने सोचा था फर्स्ट स्ट्रोक साइकिल आएगी, इंडक्शन, कंप्रेशन, कंबस्टन, एग्जॉस्ट, आपने वो पावर बना दिया. फिर कंबस्टन साइकिल का आप करो कि अपना पिस्टन डाउन होएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, फिर सब कुछ ट्रू होएगा. सॉरी अगर आप पावर, जो आपने पावर साइकिल लिखा है ना, उसको अगर आप कंबस्टन लिखो, पावर आपने जो साइकिल लिखी है, इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, स्ट्रोक. वो पावर जो स्ट्रोक है आपका, उसको अगर आप कंबस्टन लिखो,
फिर सब कुछ ट्रू रहेगा, क्योंकि इसमें पिस्टन डाउन कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इवेंट का आप कैसे निकाल सकते हो? मैं कैसे निकाल सकता हूँ मतलब? मैं देखो एक ग्राफ दिखाऊंगा, उसमें देखो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इवेंट का कैसे निकाल सकता? सी, मैंने क्या बोला पीयूष? Okay, maybe this might help you. Piyush, there is a theoretical auto cycle, there's a practical auto cycle. This theoretical auto cycle doesn't work. This works. ये पता है मुझे, हाँ। मैं मतलब मैं एक पॉइंट का क्यों नहीं निकाल सकता बता? एक इवेंट का क्यों नहीं निकाल सकता मैं? कंबशन हुई, फ्यूल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, हीट एनर्जी। बता क्यों नहीं निकाल सकता? मेरे दिमाग में कुछ हजम नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ तो अड़ा हुआ है, जो पता नहीं क्या अड़ा हुआ है। मैं आपको आप सोच के बताता हूँ। हजम नहीं होना। ठीक, चलो now let's talk about the next stroke, which is power stroke. In this stroke the air is driving the piston in the bottom direction. Okay, this is creating power. The crankshaft of the engine, the shaft of the engine was driving the piston in this stroke and this stroke also. It is only in the power stroke that it is the air is driving the engine. So the air is pushing the piston down. Because the air is pushing the piston down, what will happen to your volume? Increase. Now, are you adding energy to the system? No. So, if my volume is increasing, what will happen to my pressure? Exactly. Now, many people think power stroke है pressure बढ़नी चाहिए. नहीं. Initially बढ़ती है because of combustion, yes. But वो combustion की वजह से बढ़ती है. पावर में तो वो तो हवा, पीयूष लिसन आउट, पावर स्ट्रोक में प्रेशर नहीं बढ़ेगी. पावर स्ट्रोक में एयर is losing its energy to the piston. So here the pressure will fall. Pressure गिरा तो temperature clear. Next, exhaust. Now the piston has come down after combustion. What is remaining in the system? Exhaust gases are remaining in the system, right? Go ahead, Farad. भैया आप इसको जब एक्सपोर्ट करोगे तो वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा ना, तो आप येलो में मत लिखो. Okay, let's continue. Now in the exhaust stroke, again the engine is moving the piston in the upward direction. ठीक है? The piston is moving. So एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका जो पिस्टन है, अब क्रैंक शाफ्ट इस पिस्टन को ऊपर मूव कर रहा है. बचा क्या था सिलेंडर में? कंबस्टेड गैसेस, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट गैसेस. वेरी हॉट एग्जॉस्ट गैसेस बची थी. नाउ दे हैव टू बी टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर. सो द पिस्टन मूव्स अप, throws out this exhaust gases. How? The outlet valve or the exhaust valve opens and the piston moves up. Now it is no longer a closed system, it's an open system. Air is moving out. Okay, so in this case, since the piston is moving up, volume will decrease, pressure will also decrease, temperature will also decrease. Clear? So Piyush, you can also ask it here also. सारी decrease कैसे हो रही है? But it's no longer a open system, a closed system. ठीक है जी? Any doubts? This is how the auto cycle works. And उसके just बाद क्या होगा? इसके just बाद वापस piston नीचे जाएगा. So what you need to understand here, जैसे यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है और यहाँ पे उसके जस्ट बाद इनटेक वाल्व ओपन है.
This will cause a valve overlap when we study the practical Otto cycle. Okay? This will cause a valve overlap when we study the practical Otto cycle. That is for tomorrow. Any doubts in today's class? No? ठीक है. एक और क्लास होगी आज टेक की. Okay, so the timings have been changed a little bit. PI की timings थोड़ी change हो गई हैं, because of which there has been a reschedule. Airline prep we'll start a little late. We'll start it at 1600 hours. 4 o'clock we'll start PI. Sorry, tech airline prep की class. ठीक है जी. PI is delayed. So if we started at 1600, I'll end it at 1830. So the second class for tech, in which we will be studying about piston ही खत्म कर लेते हैं आज. Okay, शुरू कर. Do you guys have any doubts in the theoretical auto cycle as of yet? Janvi, tell me. जो हमने पावर में किया था स्ट्रोक, एक बार पीडीएफ खोलना. खुली हुई है. अच्छा, my screen is not shared. Okay. इसके अंदर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, Yes, in the power stroke, because the बट piston is being moved टेम्परेचर और down. प्रेशर भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए क्योंकि कंबशन. So no, combustion तो यहाँ होगा ना. यहाँ पे the air is doing work on the piston, so it's losing its energy to the piston. तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए इंक्रीजेस It's एंड देन generally compare it डिक्रीजेस. to like the turbine stroke. Okay, in the turbine everything is decreasing. हाँ जी, बट वो इंक्रीज होके फिर डिक्रीज करता है क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, तो सेम ही नहीं होना चाहिए इसमें भी. Sorry, say again. जैसे टर्बाइन में कंबशन चेम्बर में इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस क्योंकि एक्सपेंशन होती है, तो इसमें भी पावर में कंबशन से लेके पावर में सेम ही नहीं होना चाहिए. Yes. So combustion may be, see, the pressure is first going up, then it is going down. Temperature is also first going up, then it's going down. ठीक है, वो Okay. ऑक्सफोर्ड में क्योंकि 4 स्टेप्स थे ना. Yeah. So, okay, Janvi, I get it where you're coming from. So, Janvi, the thinking that you have, that's a very good question asked by Janvi. Janvi is thinking कि piston ऊपर चला गया, spark बना, फिर piston नीचे आया. Correct? This is what Janvi is thinking. So, because जब वो नीचे आ रहा है, combustion की वजह से पहले pressure बढ़ना चाहिए, फिर कम होना चाहिए. This is what Janvi is thinking. So, Janvi, that's true, but that's true when it comes to the theoretical Otto cycle. What you also need to understand that there's a practical Otto cycle. In the practical Otto cycle, piston जब ऊपर पहुंच चुका होता है, उसके बाद spark नहीं होता है. जब वो ऊपर आ रहा होता है, तब spark होता है. Combustion takes place and combustion gets completed in the compression stroke itself. Why? क्योंकि combustion, see, piston ऊपर चला गया, फिर मैं combust करूं, तो जब piston नीचे जा रहा होगा मोमेंटम की वजह से, तब gases जल रही होंगी. We don't want that. हम लोगों को चाहिए कि जब वो ऊपर पहुंच जाए, मेरे पास गैसेस जल के हाई प्रेशर पे रेडी हो चुके हैं. Hence, combustion is done in the compression, towards the end of the compression stroke itself. Spark पहले आता है. Understood? That's why, Janvi, I've written it as a separate thing. In that combustion process, pressure will increase. Clear? In the power stroke, we are extracting the energy out of the gases. Understood? Any other doubt? No? Okay. Induction, compression, combustion, power, and exhaust, and I have made you relate it with the 4 strokes of the engine. We have also discussed about the valve position. Is that right? Okay, that's absolutely beautiful. Now let us talk about the terms and terminologies. Let's talk about the components. Once we talk a little bit about the components, then we will again go into the practical Otto cycle. Okay, to understand the entirety of the engine, we need 3 images.
And with the help of these three images, I will explain you the working. Okay, perfect. Let's talk about the piston engine. As you can see, there's a lot here. There's a lot here. Let's get to the basics. In any given piston engine, we have a cylinder in which the piston moves. Okay, this portion of the cylinder is known as the cylinder's head. This portion of the cylinder is known as the cylinder walls. Okay, this portion is the wall, this portion is the head. Okay, cylinder head, cylinder block. It says block, it's ideally known as the cylinder walls. Okay, no doubt. In this particular cylinder head, we have two holes, hole, hole. And in these two holes, there are two valves which can move up and down. Okay. Tuck, 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 tuck. Clear? And same goes here. So we have two valves. Okay. Great. This is also moving like tuck, 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 tuck. Open and close. This is the valve is open and this valve is now closed. Okay. Now let's talk about the piston. This here is the piston. This is the piston head. And this area is known as the piston skirt. Piston. Cool. Now this piston is connected via a wrist pin. This is known as a wrist pin. And this is known as a connecting rod. Okay, this is known as the connecting rod. The connecting rod is responsible for connecting the piston to the shaft of the engine. The shaft of the engine is known as the crankshaft. Okay, piston engine is also known as something known as a reciprocating engine. What is a reciprocating engine? The piston engine is a reciprocating engine. रेसिप्रोकेटिंग इंजन का मतलब ये होता है, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब something which has a to and from motion. Okay, so the piston is moving up and down and up and down and up and down and up and down, but our wheel is moving in a circular manner, right? So we need to convert this particular type of motion, a to and fro reciprocatory motion, into a rotatory motion. What helps us do this? Two things: connecting rod and the crankshaft. Crankshaft is the shaft which rotates. Crankshaft is the shaft which rotates. It's the main shaft of the engine. Okay, but how is the motion from the piston to the crankshaft transferred? It's transferred via the connecting rod. Imagine my fist is the piston and this is the big end of the connecting rod, which is the connected to the crankshaft. Okay, so the piston is moving like this, but this thing, just like a wrist, is like a wrist pin. So it moves like this. Okay, कैस्ट्रॉल की ऐड देखी होगी, राइट? सो शाफ्ट बीच में, अब ये जहां से कनेक्टेड है ना ये बंदा शाफ्ट से, राइट? तो उसको घुमा रहे, इट्स इन अ सर्कुलर मोशन. Good. So one end of this particular connecting rod is doing linear motion, to and from motion. The other end of this rod is doing rotatory motion. Clear? Now ये रोटेटरी मोशन ही वो मोशन है जो अपने क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है. ओके, दिस इज हाउ द कनेक्टिंग रॉड वर्क्स. द कनेक्टिंग रॉड हैज अ स्मॉल joint here known as the wrist pin, and it is also connected to the crankshaft. Crankshaft is the main shaft of the engine. Now let us come to the crankshaft. Crankshaft is a very important component. Okay, crankshaft is a very important component. Crankshaft. Now think about this. I'm at the top dead center. Cool.
everyone to look here. Now piston moves down one stroke. The crankshaft moves 180 degrees. Do you guys agree? So whenever there is one stroke, stroke one, the crankshaft moves 180 degrees. Then in the next stroke, the crankshaft moves more 180 degrees. Similarly, in stroke 3 and stroke 4, it still moves 180 degrees and 180 degrees. So in all, it moves 720 degrees. What does this mean? One Otto cycle is equal to 720 degrees of crankshaft rotation. Basically 4 strokes. Yes or no? Yes, of course, yes. Now, there are other moving components also inside the engine, like the valves. Now we want the valves to move according to the cycle, right? According to the cycle. मतलब यार ये 720 डिग्रीज में एक साइकिल खत्म हो रही है, एक साइकिल तो 360 डिग्री होना चाहिए ना, वाल्व तो उसी हिसाब से खुलेगा ना. We want the intake valve to open once in 360 degrees, once in a cycle. We want the exhaust valve to open once in a cycle. Correct? So valves को operate करने के लिए we want something that rotates at 360 degree per cycle. Right? So हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट से हम लोगों ने थोड़े गियर्स वगैरह सबसे कनेक्ट करके, चेन्स वगैरह सबसे कनेक्ट करके हम लोगों ने एक और शाफ्ट बनाया जिसको हम लोग कहते हैं कैम शाफ्ट. Now the cam shaft rotates at half the speed of crankshaft. मतलब ये मस्त 1 2 रोटेट कर रहा है 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज 720 डिग्रीज रोटेट किया, 4 गियर से कनेक्ट कर दिया, हाफ स्पीड में रोटेट कर रहा है. सो इट इन 4 स्ट्रोक्स इट मूव्स 360 डिग्रीज. ठीक है, 4 strokes it moves 360 degrees. Why is this used? इससे क्या चलेगा, इससे आपके valves चलेंगे. ठीक है. सो क्रैंक शाफ्ट से मैकेनिकली कनेक्टेड होता है आपका कैम शाफ्ट. ओके, अभी कैम शाफ्ट क्या होता है, कैम शाफ्ट के ऊपर लगे रहते हैं ऐसे लोब्स. ये आपका शाफ्ट है, ये रोटेट करता होता है, बट इस शाफ्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, कैसा लोब सा बना दिया, अंडे जैसा. सो व्हेन दिस शाफ्ट रोटेट्स, इसके यहाँ पे एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व कनेक्टेड होता है. Right? So when this lobe rotates and it comes down, it will push this spring loaded valve down and then again up. So this is how the valves are made to move in accordance with the strokes of the engine. Is everyone clear? Is everyone clear? Yes. So now one more thing, please keep this in your head, whatever I'm teaching right now. Now let's say आपको मालूम होता होगा इंजन की मॉडिफिकेशन की जाती है वाल्व की टाइमिंग्स चेंज करके, राइट? मस्ट हैव हर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं इंजन की टाइमिंग्स को? कुछ नहीं, ये जो लोब ऐसे ऊपर की तरफ अंडा है उसको वाल्व टाइमिंग चेंज करनी, कुछ नहीं, लोब को थोड़ा ऐसे घुमा दो तो वाल्व टाइमिंग चेंज हो जाएगी. नाउ द वाल्व विल ओपन अ लिटिल लेट. We can also make the valve open a little early. So by changing the angle of the lobe or by changing the camshaft angle, you can change the timings of the valves opening and closing. This will come again a little later when we study the practical Otto cycle. Any doubts in valves? Any doubts in what a camshaft is? No? Pakka? I'm just telling you about the different components and how are they related to each other. We will study all of this once again.
कि वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं. We will study all of this in much greater detail. Okay, so we're done with crankshaft, we're done with cylinder block, right? This is the area in between. This is the area where the combustion of gases takes place. So this will be known as the combustion chamber. Intake valve we have already studied in, right? Cylinder head we have already studied. Piston we have studied. Okay. Camshaft we have studied. Now this thing, can you see this? This is the shaft. This is the lobe. So this will be known as the cam lobe. It's not written here. It's known as the cam lobe. Okay. Great. Now one more thing. See. Now when the piston moves up, you will have to ignite the mixture. Mixture क्या होता है? Mixture is the mixture of air and fuel. ठीक है? Ram air is taken into the engine. Fuel is added to that air, and that mixture of the air and the fuel is introduced inside the piston cylinder. वो कहाँ से इंड्यूस होता है? ये जो intake valve है ना, this intake valve controls the opening and closing of this particular thing. यहाँ पे जो मिक्सचर जहाँ से आ रही होती है, इंटेक वाल्व कोई ढक्कन किसी को तो बंद किया हुआ है ना, किसको बंद किया हुआ है? इस चीज को हम लोग कहते हैं इंटेक मैनिफोल्ड. वहां पे मिक्सचर रहता है. ओके, तो यहां से हवा अंदर आती है. सो सिमिलरली एयर फ्रॉम द एग्जॉस्ट वाल्व वी हैव आल्सो डन goes to the exhaust manifold. Okay. As the cam lobe, I told you it's a spring loaded thing, so springs are also there. Okay. Now to ignite the mixture, spark plug. Again, we can also change the timing when the spark will come. Okay. Any doubts? Okay. Now modern engines. ये जो है ना, मेटल की एक लेयर बना दी, एक और लेयर बना दी, बीच में पानी डाल दिया कूलिंग के लिए. तो कूलेंट वगैरह जो आप गाड़ियों में डालते हो वो क्या होता है? बेसिकली वो सिलेंडर्स को इंटरनली कूल करता है. Liquid cooled cylinder heads, kind of like that. Now this entire arrangement of what? Arrangement of three things: crankshaft, connecting rod and piston. इन तीनों का अरेंजमेंट किसके अंदर है? क्रैंक केस के अंदर है. Crank case contains three things. Question है इसका. Clear? So did you understand that crankshaft वाला फंडा? And how does 720 degrees वो वाला फंडा समझ आ गया ना? क्योंकि वो important है समझना. Okay. So this is the piston again. This is the wrist pin. How is this a wrist pin? So ये क्या होता है? पिस्टन की स्कर्ट के अंदर ये कनेक्टिंग रॉड जाएगी, and it's you basically align all the holes together and then you insert just a pin. So if you hold the piston, it's a dangly thing which is free to move. Okay. Then that's the connecting rod. अब कनेक्टिंग रॉड को तुम क्रैंकशाफ्ट में डालोगे कैसे? तो इट्स मेड अप ऑफ टू थिंग्स. ये डालो, क्रैंकशाफ्ट अंदर घुसाओ, एंड देन उसको नीचे से कनेक्ट कर दो, स्क्रू से टाइट. Clear? Now let's see the piston in greater detail. So this is the piston. This is known as the piston skirt. Okay. This is known as the piston crown. Okay. Combustion का सारा बोझ यहीं पे आता है. तो ये combustion area. Okay जी. Now the sides of the piston skirts have some decorative pieces. 3 decorative pieces. 1, 2, 3. Okay, what are these? These are rings. यहाँ पे ऐसे गड्ढे रहते हैं where you can insert a metallic ring. Now this metallic ring also has some gaps in between, like here and like here. Why? This is known as the ring gap. Basically जब heat होगा तो वो ring gap बंद हो जाएगी.
और जब वो कूल डाउन होगा रिम गैप खुल जाएगी, तो उतना चलता है to cater for the expansion of metals. Okay, so why do we have these rings? These rings are known as compression rings. Why do we have these rings? So when the piston basically moves up and down inside the cylinder, like piston के ऊपर वाला हिस्सा तो is under combustion, उसके नीचे वाला हिस्सा has oil, lubrication oil. So that is also sticking to the wall of the cylinder. Now we don't want the oil to go into the combustion area, so this basically scrapes out the oil. ठीक है, तो पहला तो इसका ये काम हो गया. दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है टू कीप द कंबशन एरिया एंड द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन सेपरेट. वहां का हाई प्रेशर यहाँ पे क्यों जाए, वहां के बर्न्ड कंबस्टेड गैसेस यहाँ पे क्यों जाए, एक सील्ड एनवायरनमेंट देने के लिए, जस्ट लाइक अ सिरिंज. ओके, एनी डाउट्स? Lastly, we have the crankcase, a crankshaft. Crankshaft क्या है? So we have this. Look at this. So this one is a 3-cylinder crank. Okay. तो ये आपका सेंट्रल पोर्शन है. बेसिकली दिस इज द एक्सेस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, राइट? एंड इसके ऑफसेट किए हुए क्या रखे हुए हैं? क्रैंक पिन्स रखे हुए हैं. 1 2 क्रैंक पिन्स. सो क्रैंक पिन्स कहाँ से कनेक्टेड होते हैं? क्रैंक पिन्स आर द प्लेसेस वेयर द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स इट. एनी डाउट? नो डाउट? पक्का? एंड ये पूरी चीज को क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं. जो ऐसे टिक टुक टिक टुक टिक टुक, the zigzag area, that entire thing is known as the journal. So this is just a brief overview over the structure of the piston engine. Now we will be studying the piston engine and the practical Otto cycle in greater depth. Is that clear? Okay. So let's start with the practical Otto cycle. How is the practical Otto cycle a little different than the theoretical Otto cycle? Okay, ji? This is what you're going to study. Now the only difference in the practical Otto cycle is 3 things: valve lead, valve lag, spark timing. And valve lead and valve lag together will give you valve overlap. Okay, so let's start. So the theoretical Otto cycle only works in theory. If you actually try to make it into an engine, it will be very inefficient. Now to make it a little efficient, to cater for the inertia in gases, this thing caters for inertia in gases, inertia in the movement of gases. Ankit, are you there? Ankit, are you there? Okay, so valve lead and valve lag caters for the inertia of the movement of gases in each stroke. And what does the spark timing have to do? Spark timing caters for the time duration it takes for the gases to burn. Okay, so let us understand how is the practical Otto cycle different from the theoretical Otto cycle. In valve lead, what happens is the inlet valve and the exhaust valve, they open early.
they open early. Why? I'll explain. So let's talk about the intake stroke or the induction stroke. And let us talk about the exhaust stroke. So you have the cylinder and the piston wants to move down. And the piston wants to move down. Now अब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में मूव कर रहा, इधर से इधर मूव किया, तो और उस ड्यूरेशन में अगर वाल्व खुले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? देयर विल बी अ लैग बिटवीन द मिक्सचर एक्चुअली कमिंग इन. हम लोगों को चाहिए कि यार जब पिस्टन उसको सक करे देन इट्स कंप्लीटली ओपन एंड मिक्सचर इज रेडीली अवेलेबल. हाँ भाई. So when the piston is going down, हम लोगों को चाहिए कि वाल्व खुला हो. So that's why we will open the inlet valve way before the intake strokes come there. Now, what is valve lag? Valve lag means we will close the valve a little late. ठीक है? Close inlet and exhaust valve late. Why? Again, the answer is momentum. So अब तुमने पिस्टन खींच लिया अंदर और मैं बॉटम डेड सेंटर आती मैं बंद कर दूं. जब तुमने खींचा तो देयर विल बी सम मोमेंटम ऑफ द गैसेस व्हिच इज कमिंग. ये देखा गया कि पिस्टन नीचे आ गया और फिर वो थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, तब तक गैसेस ऊपर से तो घुस ही रही होती है. सो टू कैप्चर दोज गैसेस एज वेल, because of the momentum of the gases which is coming inside the cylinder, to capture those gases as well, after the piston has gone a slightly little up, then you close it. So this was about the intake stroke. Same goes with exhaust stroke. Now let's say पावर स्ट्रोक में तुमने नीचे डाल रहे हो, इसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक आने वाला है. ठीक है, अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक आ रहा है, अब ये पिस्टन ऊपर दबा रहा है, उसके बाद वाल्व खुले. सो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग द पिस्टन ऑलरेडी ऊपर हॉट गैसेस है, अब तुम वाल्व खुलने का वेट कर रहे हो जब वो ऊपर जा रहा है. सो यू आर बेसिकली मेकिंग द पिस्टन डू मोर वर्क. We don't want that. So even before you reach the bottom dead center, पावर स्ट्रोक आ रहा है. So by the time तुम नीचे पहुंच चुके होते हो, तुम्हारा जो पावर स्ट्रोक से जितनी पावर आनी होती है ना, वो आ चुकी होती है, वो आ चुकी होती है. There is something known as an ineffective crank angle. There is something known as an ineffective crank angle. बताऊंगा क्या होता है. So क्या कहते हैं कि जब पिस्टन नीचे आ रहा होता है, सो फर्स्ट 180 डिग्रीज में से 130 डिग्रीज में से उसकी सारी एनर्जी ऑलरेडी जा चुकी होती है, बाकी वो नीचे जा रहा होता है मोमेंटम के साथ. सो इन दैट एरिया तुम वाल्व पहले ही खोल के रख लो, तो थोड़ी गैसेस पहले से बाहर जाएंगी और फिर तुम उसको पुश कर दोगे. because in the last few degrees it is not doing much work. I'll show you why. That is known as ineffective crank angle. इस चीज का नाम क्या होता है? अगर एग्जॉस्ट वाल्व को मैं ज्यादा जल्दी ओपन कर देता हूं, अगर एग्जॉस्ट वाल्व को मैं ज्यादा जल्दी ओपन कर देता हूं, ओपन अर्ली, तो इससे क्या होता है? What is this particular phenomena called? This particular phenomena is known as pressure scavenging. ठीक है? Pressure scavenging. Basically, we are taking away the air pressure or whatever away, and we are getting it, throwing it into the exhaust manifold. So, is this good or bad? It's good. Will it produce a lot of loss of mechanical energy? No, it will not produce a lot of loss of mechanical energy. Why? The answer is because a very short distance is left. Very short distance over an ineffective crank angle.
इज रिमेनिंग, एंड इसके ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत कम है, बिकॉज नाउ gases have already expanded. Gases have already expanded, so it really doesn't make a difference. Okay, अगर आप ये चीज नहीं करते हो, if you don't do this, so when the piston is going up, it will have to put some pressure, it will have to put some pressure, it will have to do work, spend more energy. That is a loss of energy, right? उस चीज को एक वैल्यू बोल, एक टर्म दे दिया कि इट इज नोन एज एग्जॉस्ट बैक प्रेशर. It is known as exhaust back pressure. So what is exhaust back pressure? If you don't do this, आपका exhaust back pressure बढ़ जाएगा. Exhaust back pressure. Basically, it is the extra pressure on the piston. Extra pressure on the piston. For what? For pushing the exhaust gases out. So अगर exhaust gas pressure बढ़ गया तो आपकी efficiency नीचे जाएगी. Okay? So आजकल गाड़ियों में टर्बो चार्जर आता है. अब जो टर्बो चार्जर होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस पे चलता है. जो टर्बो चार्जर होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो एग्जॉस्ट गैसेस पे चलता है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट एग्जॉस्ट बैक प्रेशर बढ़ जाता है. ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट? गुड. अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल. सो नाउ एग्जॉस्ट वाल्व में वाल्व खुला हुआ है. थ्रू आउट द एग्जॉस्ट स्ट्रोक द वाल्व इज ओपन. इसके बाद कौन सा स्ट्रोक आता है वापस? इंडक्शन. उसमें भी वाल्व जल्दी खुलता है. सो मतलब जब पिस्टन ऊपर जा रहा होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब ऊपर टॉप डेड सेंटर पहुंचने वाला होगा, उतने में ही हम लोग इनलेट वाल्व भी खोल देते. सो नाउ टू वाल्व्स आर ओपन. नाउ टू वाल्व्स आर ओपन. द इनलेट वाल्व इज आल्सो ओपन. The outlet, the exhaust valve is also open. So what is this thing called? Valve overlap. Okay, this is known as valve overlap. What is valve overlap? It is the time duration. It is the time duration when both valves are open partially. When एग्जॉस्ट स्ट्रोक से इंडक्शन स्ट्रोक में आप जाते हो, उसके बीच में ओके. अब इसका क्या सिस्टम है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? दोनों वाल्व खुले हुए हैं, इसके पीछे क्या सिस्टम? सो जब एग्जॉस्ट गैसेस को तुम पुश कर रहे हो तो मोशन बन चुका है सारे गैसेस का बाहर जाने का, राइट? एंड रैम एयर आ रही है, मिक्सचर के थ्रू अंदर आ रही है. सो बेसिकली इसका थ्योरी ये है कि अगर आपने दोनों वाल्व खुले हुए हैं, सो जो अंदर आती हुई फ्रेश एयर है जो बाहर आती हुई एग्जॉस्ट गैसेस है, उल्टा उसको पुश ही करेगी बाहर जाने में, क्योंकि उसका मोमेंटम वहां पे बना हुआ है. अगर आपको लग रहा है कि यार एग्जॉस्ट गैसेस इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर घुस जाएंगी, तो वो नहीं घुसेंगी. एग्जॉस्ट गैसेस का एक मोमेंटम बना हुआ है बाहर जाने का, और इनटेक गैसेस का एक मोमेंटम बना हुआ है अंदर आने का, बिकॉज ऑफ रैम प्रेशर. तो that will only help in putting out the gases outside and increase your efficiency. Any doubts? This is about valve lead, valve lag, and valve overlap. Okay? Any doubt? Now let me teach you what is ineffective crank angle. Are strokes more important to us, or is the angle that the crankshaft rotates more important to us? चक्का कितना घूमा वो इम्पोर्टेंट है ना भाई. हमें तो कितने एंगल से घूमा हमें वो इम्पोर्टेंट है. So let's explain you what is ineffective crank angle.
So let's say the piston moves from this angle to this angle. Let's say it has moved 45 degrees. So it's been moving from here to here. Clear? What is the physical distance that the piston moves? The physical distance that the piston moves is only this much, tad bit. Now let us consider from here to here. Again 45 degrees. The piston moves a bigger distance. है ना? See, इसको जब फर्स्ट फ्यू डिग्रीज नीचे आना है तो जो मोशन है, एंगुलर मोशन, वो बहुत कम है ना? जो आपका लीनियर मोशन है उसकी वजह से इतना छोटा मोशन हुआ लीनियर का, पिस्टन को मैंने सिर्फ इतना सा पुश किया, एंगल देखो कितना बड़ा एंगल क्रिएट हो रहा है. सो कहने का मतलब ये कि अगर एंगल मेरा 45 से 45 जा रहा है, द स्ट्रोक इज ओनली टैड बिट, है ना? सो ये जो ऊपर के जो इतने टैड बिट स्ट्रोक्स हैं एंड जो नीचे के टैड बिट स्ट्रोक्स हैं, दे आर इनइफेक्टिव. Right? These strokes where you are pushing the crankshaft, rotating it from here, that is more effective. Now do you understand what do you mean by ineffective crank angle? When the piston is near the top dead center, उतना कुछ खास मोशन नहीं क्रिएट कर रहा है. पिस्टन तुमको, अगर मैंने क्रैंकशाफ्ट को यहां से यहां घुमा दिया, पिस्टन विल ओनली मूव दिस मच. और अगर मैंने क्रैंकशाफ्ट को यहां से यहां घुमाया, piston will cover a bigger stroke. This is what you understand by ineffective crank angle. So when the piston is at the top dead center, close to the bottom dead center, the crank angle, it becomes very, very ineffective. The crank angle becomes very, very ineffective. Clear? No doubts? That is why शॉर्ट डिस्टेंस इज लेफ्ट. तो इनइफेक्टिव है वैसे भी वो, वहां से तुम प्रेशर हटा दो तो क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हारा. क्लियर? ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, so has everyone understood valve lead, valve lag and valve overlap? Now let us talk about spark timing. Now valve overlap and spark timing, all of these इसको measure तो करना होगा. So how are these measured? They are measured, ये लिख लो, क्वेश्चन आता है, measured in degrees of crankshaft rotation. I'll explain this. So it's not like कि यार अच्छा इंडक्शन स्ट्रोक शुरू होने वाला है, उसके 0.1 माइक्रोसेकंड पहले मैं खोलूंगा, उसके 0.2 माइक्रोसेकंड पहले खोलूंगा. इट इज नॉट अ टाइम फंक्शन. वाल्व कैसे खुलता है? लोब्स की मदद से खुलता है ना यार. तो मतलब उसको मालूम है कि यार इतने डिग्री पहले खोलना है. वो टाइम देख के नहीं खोलेगा, बिकॉज सी योर इंजन कैन रन ऑन 1000 आरपीएम, your engine can run on 2000 rpm, your engine can also run on 3000 rpm, and it can also run on 4000 rpm. So from 1000 to 4000 you're running at 400% of the speed, or you're going back to 25% of your speed, engine speed. So 1 microsecond for 1000 rpm, मतलब इंजन ही साला इतना स्लो मूव कर रहा है और तुम उसके भी 1 माइक्रोसेकंड पहले दे रहे हो. That will not give you the same efficiency कि तुम 4000 आरपीएम इतना फास्ट इंजन भगा रहे हो, तब भी तुम 1 माइक्रोसेकंड पहले ही खोल रहे हो. इट्स नॉट अ टाइम फंक्शन. तो वाल्व जो खुलता है और बंद होता है, दे आर मेजर्ड इन, उसकी टाइमिंग किस हिसाब से कंट्रोल की जाती है कि क्रैंकशाफ्ट के जब इतने डिग्री पे घूमा तब खुलेगा, क्योंकि उसी से कैम शाफ्ट कनेक्टेड है, उसी से कैम लोब कनेक्टेड है. Get it? कोई डाउट? नो डाउट्स?
Easy है. They are measured in degrees of camshaft rotation or crankshaft rotation. Now let us talk about spark timing. Let us talk about spark timing. Again, this is also measured in degrees of crankshaft rotation. Okay, so because we are talking now about degrees of crankshaft rotation, let's teach you this particular diagram. जानवी, आपने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था वो इसका आंसर इसमें. Okay, have a look at this diagram. Okay, please have a look. जेट इंजन में हम लोगों ने एक प्रेशर वॉल्यूम का कर्व किया था, राइट? सेम कर्व यहाँ पे भी है. So let's first see the axes. This is the x-axis. This is the top dead center. मतलब आपका piston पूरा ऊपर हुआ हुआ है. This is the bottom dead center. मतलब piston पूरा नीचे हुआ है. And what is this measured here? The measure thing here is pressure. Okay, pressure is one of the most important components for our piston engine. So when your piston is moving from the very first stroke, what happens? If you could please open the chart that I made you write, the pressure decreases slightly and the volume is increasing. Clear? It's going like this. Now let's see what is happening in the compression stroke. Now it's an adiabatic system. What is an adiabatic system? Adiabatic compression is basically when, we'll talk about that a little later, not adiabatic. अब देखो क्या हो रहा है. अब पूरा सिस्टम तुम्हारा बंद है. अब क्या होगा? Now since you're compressing it, see what is happening to your pressure. Your pressure is increasing, right? Can you see a small star here? This is the spark. Why are we inducing the spark? We are inducing the spark so that the compression is helping the pressure to build. This, now see, only after the spark, the increase in pressure is exponential. It is exponential. Janvi, now here you have reached your top dead center. है ना? Even after, now it is going back. Now it is going back. Now even up till the time it's going back in effective crank angle, the pressure is still increasing. This particular section only. But majorly from the top dead center to the bottom dead center, the pressure is then decreasing. Now this is where the spark is induced in the compression stroke itself. Why? So that we can take this time for the pressure to build up. Now this increased pressure and high temperature and pressure gases, these will push the piston down. Okay, if we made the spark here, then it would have been very, very ineffective. Why? Because तब तुम्हारा piston नीचे जा रहा है and तब burning हो रही है. नहीं, we want burning to finish by the time you reach top dead center. Clear? Easy? Cool. Now let me teach you a beautiful thing here. Spark timing. ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ. अब देखो, मिक्सचर को बर्न होने में तो 2 मिलीसेकंड लगेंगे. अगर तुम हाई आरपीएम पे हो तो मिक्सचर को बर्न होने में भी 2 ही मिलीसेकंड लगेंगे. अगर तुम लो आरपीएम में हो तब भी उतने मिक्सचर को बर्न होने में भी 2 मिलीसेकंड लगेंगे. सो नो मैटर व्हाट यू डू, इट विल टेक यू 2 मिलीसेकंड. तो एक बात बताओ, अब मेरी इंजन चल रही है स्लो 1000 आरपीएम पे, मतलब पिस्टन को यहां से यहां आने में टाइम लग रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक में टाइम लग रहा है, ऊपर आने में टाइम लग रहा है. तो अब मान लो मैं यहां स्पार्क दे दूं, 0.1 मिलीसेकंड हो गया. उसके बाद और कंप्रेशन हो रहा है. ठीक है, अब 2000 आरपीएम.
2500 आरपीएम स्पार्क, परफेक्ट, ये परफेक्ट था, मतलब स्पार्क आया एंड बाय द टाइम कंबशन गॉट कंप्लीटेड टॉप डेड सेंटर भी आ गया. दिस इज व्हाट वी वांटेड. अगर इससे स्लो हुआ तो क्या हुआ, तुमने उसी क्रैंक एंगल पे तुमने स्पार्क क्रिएट किया. क्योंकि इंजन स्लो रन हो रहा है, बिफोर रीचिंग द टॉप डेड सेंटर योर कंबशन इज कंप्लीट, राइट? नॉट गुड फॉर अस. कंबस्टेड गैसेस को कंप्रेस कौन करता है भाई? Now let us now rotate it at 4000 rpm. So now the piston is going up very fast, but the mixture will still take 0.1 microsecond or 0.2 millisecond to burn. Now the piston, अब मैं वहीं पे बर्न किया, वहीं पे उसी एंगल पे मैंने स्पार्क क्रिएट किया एंड मैं ऊपर गया, ऊपर पहुंच गया, लेकिन मिक्सचर पूरा बर्न हुआ ही नहीं बिकॉज इट हैज रीच क्विकली. So the timing of the spark has to be very smartly and accurately controlled. Right? So by controlling the spark timing, we can, if for an engine which is running at a low RPM, the spark is delayed. Correct? क्योंकि वो स्लो है, पिस्टन स्लो मूव कर रहा है, तो हम लोग लेट स्पार्क करेंगे ताकि जब तक ऊपर पहुंचे तभी जाके कंप्लीट हो. एंड इफ द इंजन इज अ हाई आरपीएम इंजन or you're running the engine at a high RPM, then the spark is preponed. कोई डाउट? पक्का? No doubts. This is how the practical Otto cycle works. This is the difference between the actual Otto cycle and the practical Otto cycle. Now let us talk about engine power and efficiency. So what you saw there, you saw कि यार एक पिस्टन के ऊपर थ्रू आउट द 4 स्ट्रोक्स अलग अलग प्रेशर लग रहा है, अलग अलग अमाउंट का प्रेशर लग रहा है, राइट? सो द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द पिस्टन, the greater is the power produced. Who all agree with me? Greater the density of the air, greater the amount of pressure, greater the air pressure, greater is the power produced. Who all agree with me? The question is, can we say here power is directly proportional to pressure? Yes, it is. ज़्यादा हवा अंदर जाएगी, ज़्यादा प्रेशर की हवा अंदर जाएगी, तो ज़्यादा पावर जनरेट होगा. I've sent you a diagram in the group. Now what is this diagram? So along the 4 strokes of the engine, okay, top dead center, this is the intake stroke, this is the intake stroke on the bottom right, this is the compression stroke, this is the power stroke, this is the exhaust stroke. Okay, थोड़ा अलग बना है. What is they telling you? They are telling you what is the pressure. So they say that okay, through the compression stroke the pressure is increasing, then peak pressure is just before. As I told you, we want the peak pressure to be just before the power stroke. In the power stroke the pressure is decreasing, then the power is further decreasing in the exhaust stroke, and इसमें तो नेगेटिव में ही रहता है ना? सो ये पूरे कर्व का हम लोगों ने एक एवरेज लिया, ये पूरे कर्व का हम लोगों ने एक एवरेज लिया, बिकॉज सी दिस इज द आउटपुट दैट यू आर गेटिंग, दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग. This is the output that we are getting. Now to get this much pressure ka output, we are getting this much pressure ka input. Yes. So what we did was, we have the entire red area. This is the output. And we have the blue area, that is the input of pressure. Just like jet engine. ना? हमको मिला बहुत बढ़िया एनर्जी मिला, बट हम लोगों को कुछ इन्वेस्टमेंट भी तो था.
So we are taking out the investment from our फाइनल जो भी हम लोगों को प्रेशर मिला, वी आर टेकिंग आउट, हम लोगों ने जितना भी प्रेशर उसको दिया, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस गिवन रेड एरिया विच आई हैव ड्रॉन, उसमें से हम लोगों ने ब्लू एरिया सब्ट्रैक्ट कर लिया, राइट? सो हम लोगों को कितना रेसिडुअल प्रेशर मिला? वी गॉट इतना रेसिडुअल प्रेशर. सेम थिंग इज रिटन हियर. So can we say on an average, this much is the amount of pressure that is acting on my engine as a result of combustion, as a result of it being an engine, right? This pressure is known as the indicated mean effective pressure. ठीक है? Just read this, subtracting the sum of the areas which are colored blue from the areas which are colored whatever, and colored from the area within the power column. ब्लू को पावर कॉलम के एरिया से मैंने सब्ट्रैक्ट किया. That gives us the red block. This is the average pressure on the piston. This is the average pressure on the piston. This is known as indicated mean effective pressure. So can we say that the power that is produced by the engine is a direct function of this? In fact, it is. So, but please keep this in mind now. This is all theory, huh? This is still all theory. This is still all theory. So now what we did do is all of these mathematicians, they took this very same thing and they said, on paper, my engine should produce indicated horsepower on paper. And that is a direct function of P, the indicated mean effective pressure. This pressure is doing some work. Firstly, this pressure is acting on a unit area. Right? Do you guys agree? Yes. What is that area? It is the piston ka area. Piston ka area. Pressure इसके ऊपर act कर रहा है, तो force. So pressure multiplied by the area. That's a force. Now that force is doing some work. It is moving a piston in the distance, over a distance, correct? You are moving the piston across what distance? From the top dead center to the bottom dead center? What is that distance known as? The stroke, the L. How many such cylinders? In your general Cessnas, there are 4 cylinders. So the number of cylinders, right? Do you guys agree? But this is work done. We need power. So we want to multiply it by how many times a minute? Basically RPM. तो हम लोगों को पावर मिल जाएगी E and divided by 33000. Okay? Why? This is a constant. ओके, प्रेशर आप पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में मेजर करोगे, उसको फीट में मेजर करोगे, जो भी जिस भी आप यूनिट में मेजर करोगे, टू जस्ट गेट द यूनिट्स इनटू वॉट, पावर इज मेजर्ड इन वॉट. यहाँ हॉर्स पावर में लेके आने के लिए, समझ रहे हो, उस चीज को हॉर्स पावर में लेके आने के लिए बस एक कांस्टेंट है विच इज केटरिंग फॉर द यूनिट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स. सो व्हाट इज P? P is the IMEP, which is come from here. ठीक है. What is L? It is the stroke length. Basically TDC to BDC, physical length. What is A? Cross section area of the cylinder. What is N? Number of cylinders, क्योंकि एक सिलेंडर तो नहीं है. What is E? Effective strokes per minute. कोई डाउट?
नो प्रॉब्लम्स, सिंपल हो गया ना? कोई डाउट? Okay, but the engine on paper produces this power. On the cylinder, it produces this power. But is this the power that we get at our shaft? No. So, in the cylinder on the paper, it produces this much power. So, indicated horsepower. सिलेंडर के अंदर आग के लिए इतनी एनर्जी आ रही, कुछ लॉसेस होंगे, इसमें से लॉस हुआ फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर. तो हमको क्या मिलेगा? SHP और BHP. Indicated horsepower minus friction horsepower. Basically, what is this? This is due to the losses inside the engine. This will give us shaft horsepower, also known as brake horsepower. गाड़ी खरीदने जाओगे, कितने BHP का इंजन है, HP नहीं बोलेंगे, कितने हॉर्स पावर नहीं बोलेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब शाफ्ट में तुमको इतना एनर्जी मिलेगा. एनी डाउट? आसान हो गया ना चीजें? यही चीज को ऑक्सफोर्ड से पढ़ोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग जाएगा.